Assalamualaikum. Myself Aqsa Ali, bearing roll number 17ES37. My presentation topic is Programmable Logic Controller. So these are the contents of my topic which I am going to discuss. What is PLC? History, programming language of PLC, ladder logic, major components of PLC, advantages, disadvantages and applications. So what is PLC? A programmable logic controller, PLC, is a specialized computing system used for control of industrial machines and processes. A PLC is a computer designed to work in an industrial environment. It uses a programmable memory to store the instructions and specific that include on-off control, timing, counting, sequencing, arithmetic, and data handling. PLC are equipped with special input or output interfaces. PLC क्या होता है? PLC हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, तो इसके नाम से ही समझ आता है कि ये एक कंट्रोलर है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो PLC एक कंट्रोलर है जिसमें हमें लॉजिक लगा के प्रोग्राम बनाना होता है, फिर वो प्रोग्राम के हिसाब से वो काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाया, फिर केबल के थ्रू उसको PLC में लोड कर दिया। उसके बाद जैसा भी आपने प्रोग्राम बनाया है उसी हिसाब से आपका PLC काम करेगा। तो ये होती है, इसको हम PLC कहते हैं। उसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ PLC। PLC वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s. First commercial and successful programmable logic controller was designed and developed by Medicon as a relay replacer for General Motors. Earlier, it was a machine with thousands of electronic components. Later, in late 1970s, the microprocessor became reality and greatly enhanced the role of PLC, permitting it to evolve from a simple relay to sophisticated system as it is today. Programmable language of PLC. Most common languages encountered in PLC programming are ladder logic, functional block diagram, sequential function chart, Boolean mnemonics. ज़्यादातर जो है लैडर लॉजिक की प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं PLC में। अब लैडर लॉजिक क्या है? Ladder logic is the oldest programming language for PLC. It is well suited to express combinational logic. The main ladder logic symbols represents the element. For example, ladder logic क्या है? एक PLC है जिसकी इनपुट में आपने एक स्विच कनेक्ट कर दिया और आउटपुट पे एक बल्ब। फिर आपने लैपटॉप में एक प्रोग्राम बनाया जिसमें एक स्विच है और एक आउटपुट कॉइल। प्रोग्राम में आपने स्विच को इनिशियली नॉर्मली क्लोज कंडीशन में रखा, इसका मतलब वो स्विच पहले से ही प्रेस है। फिर आपने ये प्रोग्राम PLC में लोड कर दिया। जैसे आप प्रोग्राम PLC में ट्रांसफ़र करेंगे, आपका बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और स्विच प्रेस करने पर ही वो ऑफ़ होगा, क्योंकि आपने कंडीशन दी है कि स्विच पहले से ही प्रेस है और आपका बल्ब पहले से ही ऑन रहेगा। अगर आपने स्विच को इनिशियली नॉर्मली ओपन कंडीशन में रखा होता तो आपका बल्ब स्विच प्रेस करने पर ही ऑन होता और रिलीज़ करने पर ऑफ होता। तो ये होता है PLC का लैडर लॉजिक। आफ्टर दैट, कंपोनेंट्स ऑफ PLC. So these are the components of PLC as shown: input, power supply, processor, programming devices and output. Major components of of common PLC. First is power supply. Power supply provides the voltage needed to run the primary PLC components. And after that, input-output modules. Input-output modules provide signal conversion and isolation between the internal logic level signals inside the PLC and the field high level signal. What processor do? Processor provide intelligence to command and govern the activities of the entire PLC systems. And programming device, used to enter the desired program that will determine the sequence of operation and control of process equipment or driven machines. After that, advantages of PLC. So advantages of PLC are reliability, flexibility in programming and reprogramming, cost effective for controlling complex systems, small physical size, shorter project time, high speed of operation, ability to communicate with computer system in plant, ease of maintenance or troubleshooting, reduced space and energy saving. And disadvantages of PLC are: PLC devices are proprietary. It means that part or software of one manufacturer can't be used in combination with parts of another manufacturer.
and second is limited design and cost option. Third is fixed circuit operation, and PLC manufacturers only offers only closed architectures. So these are the advantages of PLC. After that, applications. Wherever automation is desired, the PLCs are best suited to meet the task. Few examples of industries where PLCs are used: robots manufacturing and control. Second is car park control. Third is train control station system. Fourth is food processing. Five is material handling. Six is machine tools, and seven is conveyor system and etc. So this was all. Thank you for listening.